Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter executive, and under this chapter we were discussing about permanent executive, which is based on merit and talent, and we have also discussed the categorization of this permanent executive. There are three types of permanent executive in India. The bureaucracy. Three types of services are there under this bureaucracy. The first is All India Services, and example of All India Services are like IAS, then IPS, Indian Administrative Services, Indian Police Services, Indian Forest Services. These all come under All India Services. Then central services are also there. The IRS, Indian Revenue System, Indian Indian Revenue Services, Indian Foreign Services, they come under this central services. And then state services are there, like sales officers. These come under state services. And now we will discuss the difference between these services. What is the main difference between these services? So we will see the first of all India Services. The personnel who are there in the All India Services, actually they are the backbone of the higher level bureaucracy in the states. These people who are in All India Services, they are appointed by Union Public Service Commission, which is in the control of central government or union government. And after getting appointed by this UPSC, they are assigned a particular state. They can be assigned any state within the country. पूरी country के अंदर किसी भी state, कोई भी state उनको assign किया जा सकता है, और उस state के अंदर they are given the most important post, like district collector, जो एक state के अंदर एक बहुत ही पावरफुल पोस्ट होता है. तो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो पोस्ट होता है वो दैट इज होल्ड बाय एंड नॉर्मली ऐसा ही होता है कि उस पर IAS ऑफिसर जो होते हैं वो उनको बनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. सो ये जो ऑफिसर होते हैं दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, they are the most important post, one of the most important post in the state government. अब ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो काम करते हैं, ठीक है. दे आर अपॉइंटेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. मतलब वो एक यूनियन की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं. दे वर्क इन अ पर्टिकुलर स्टेट. किसी भी स्टेट में ऑल ओवर इंडिया वो काम कर सकते हैं, उनको कोई भी स्टेट असाइन किया जा सकता है. एंड जब व्हेन दे आर holding a very responsible post in the state government, they are working under the supervision of the state government. But here the most important thing comes ki they are not responsible, or we can say ki any kind of disciplinary action cannot be taken by the state government. If there is any kind of need to take a disciplinary action against such employee of All India Services, then it can be done only by the central government. So this is the system. They are appointed by central government. They are assigned any of the state of the country. They work as they are given one of the most important posts in the states. They work under the supervision of the state government, but they are not in the control of the state government. They are controlled by the union government. So this also comes under one of the most important feature of our federalism. We have federalism, है ना. We have adopted government at 2 levels in our constitution. Presently we have 3 levels of government. तो जो second level की government है, that is state government. तो यहाँ पर what we are seeing, this जो All India Services के personnel हैं, they are working at the very responsible post
in the state government, but they are not in the control of the state government. So this is a kind of mechanism which was adopted by the constitution to hold the control of central government over the state government. As now you are not supposed to study the chapter federalism, and this chapter has been deleted from the syllabus, and that is one of the most important chapter. So that is why we need to discuss some of the important points whenever जहाँ कहीं भी हमें ऐसा लग रहा है कि वो फेडरलिज्म का एलिमेंट है, तो आई एम डिस्कसिंग इट विथ यू बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. एज इन द केस ऑफ गवर्नर, आई ऑल्सो टोल्ड यू कि गवर्नर के जो भी रोल है वो सारा कुछ यू हैव टू स्टडी इन डिटेल इन under the chapter federalism, but now that is not in your syllabus, but still you must know the important things like governor को मैंने discuss किया. and now ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज का जो मैकेनिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डेवलप किया, उसके पीछे यही रीज़न था कि दे वांटेड दैट देयर मस्ट बी कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, because they wanted to create federalism with strong center, because there was reason behind it. क्यों उन्होंने ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे फेडरलिज्म के अंदर स्ट्रॉन्ग बनाया? बिकॉज उस समय की सर्कमस्टांसेस जो थी वो ऐसी थी जिसके कारण देयर वाज अ काइंड ऑफ फियर इन द माइंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कि इफ वी गिव मोर ऑटोनॉमी टू द स्टेट गवर्नमेंट देन देयर कैन बी insecurity, there can be danger to the security of the country, there can be danger to the unity and integrity of the country. So they wanted to make the country strong, and that is why they have given more power to the central government. And this mechanism of all India services ki they are appointed by the central government, they are controlled by the central government, but they are working as one of the most पावरफुल पोस्ट इन द स्टेट गवर्नमेंट. तो ये एक मैकेनिज्म था. देन ये हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज का वी हैव डिस्कस्ड. ओके, एंड नाउ वी हैव सेंट्रल सर्विसेज. सेंट्रल सर्विसेज जो एम्प्लॉय होते हैं सेंट्रल सर्विसेज के, दे आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय the central government, and they are completely in control of the central government. They also work in they are assigned states also. They are also assigned states के अंदर ही वो काम करते हैं, but they are in direct control of the central government. They are not supervised by the state government. उनसे स्टेट गवर्नमेंट का कोई रिलेशन नहीं होता है, वो completely central government के कंट्रोल में होते हैं. ओके, and now comes the last category, that is state government, state services. State services के जो employees होते हैं, they are appointed by state public service commissions. like यूपी के जो अंदर जो administrative state government के जो पोस्ट हैं, उनके लिए जो रिक्रूटमेंट होती है वो यूपी की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसको हम प्रोविंशियल सर्विस कमीशंस कहते हैं, उनके थ्रू होती है. एंड इसमें अपॉइंटमेंट इज डन थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज अंडर द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अंडर द स्टेट गवर्नमेंट ओनली. देन दे आर अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. सो दिस इज द demarcation between these three services. Okay, and now we will see, we are about to complete our chapter. So we will discuss some of the we can say the problems which are associated with our bureaucracy. The first important thing about bureaucracy, we must understand that it is the bureaucracy who are responsible for implementing the various programs of the government. The government formulates so many policies, so many programs which are welfare oriented, which are for the people of the country. तो ये जो welfare oriented programs होते हैं, they are implemented through the bureaucracy. So bureaucracy is becomes very powerful. Not only powerful, its responsibilities are also very high. And accordingly, what is expected from a bureaucracy, that they must be cooperative with the people. But what our experience tell us that the situation is not such. The bureaucracy have become so much powerful
that people becomes afraid of approaching any government officer, approaching any bureaucratic officer, क्योंकि उनके पास बहुत पावर है, they are powerful, and it is not an exaggeration कि they misuse their power. Not all the officers, but most of them are like that only. So not only they misuse the power, they are insensitive also. They are insensitive to the demands of the people, they are insensitive to the expectation of the people. So this is the situation which is prevailing in our country. In this way, in this because of this reason, what happens sometimes, it is said that there should be control of the government over the bureaucracy, ताकि जो ब्यूरोक्रेसी है वो पीपल ओरिएंटेड होकर के काम कर सके, इसके लिए कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का. बट अगेन a new problem arises because there will be political interference. The bureaucracy is supposed to work in a neutral manner. It should not be inclined towards politics. Party politics should not be involved with the bureaucracy. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसके लिए भी काफ़ी मतलब उन्होंने उपाय किया कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके, इम्पार्शियली काम कर सके. देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द वर्किंग ऑफ द ब्यूरोक्रेसी. बट स्टिल वी फाइंड कि देयर इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, होता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये हम जानते हैं, ये हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं. और इन सब के बावजूद वी ऑल्सो सी कि आवर ब्यूरोक्रेसी इज not accountable to the citizen. Bureaucracy is there for the citizen only. They are there to implement the welfare policies of the government, welfare programs of the government, and all these welfare programs are for the people. So what should be the ideal condition? The ideal condition should be that the bureaucrats should be accountable to the ordinary people of the country, but it is not like that. ऐसा नहीं होता है. Ordinary citizens are not considered कि हमें उनको इतना वैल्यू नहीं दी जाती है कि जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स हैं वो समझे कि हमें उनके टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होना है. दो वी कैन से कि इन रिसेंट ईयर सम डेवलपमेंट्स हैव टेकन प्लेस, लाइक राइट टू इंफॉर्मेशन. जो RTI अब स्टार्ट हो गया है, इस RTI के कारण क्या हो रहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर हम कह सकते हैं कि कंट्रोल ऑफ द पीपल इज इंक्रीजिंग. अब आप ब्यूरोक्रेसी कुछ भी नहीं कर सकती है आर्बिट्रेरली, अपने पावर को मिसयूज या अब्यूज भी नहीं कर सकती है, बिकॉज हमारे पास कॉमन पीपल के पास राइट टू इंफॉर्मेशन आ गया है. और इसके कारण वी कैन से कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ट्रांसपेरेंसी की एक्सपेक्टेशन की जा रही है और आ भी रही है ट्रांसपेरेंसी. तो वी हैव डन विद दिस चैप्टर. This is all which we are required to study under this chapter, and we will see कि जिस तरह से हमने एग्जीक्यूटिव के पावर्स को देखा कि एग्जीक्यूटिव is all powerful, and under the parliamentary system also we see कि executive is not only powerful as the head of the government. The executive, the real executive, that is the Prime Minister and the Council of Ministers, they have the support of the majority in the legislature also. So in this situation what happens कि legislature भी जो है वो इनके ही कंट्रोल में रहता है, एग्जीक्यूटिव के ही कंट्रोल में रहता है. एंड दैट इज द रीजन मेनी टाइम्स इट इज सेड कि ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है that has converted to prime ministerial form of government, because Prime Minister has become so powerful and he is the ultimate authority. तो इस कारण से ये चीज़ें भी एलिगेशन ऐसे भी आते हैं, एंड वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर. बिकॉज जो हमारा लेजिस्लेचर है, फिर से हम उसमें लेजिस्लेचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखेंगे जो कि एग्जीक्यूटिव से जुड़ी हुई हैं. एंड देन वी विल डिस्कस कि ये जो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसका क्या हम मीन करते हैं और
उनके क्या consequences हैं. Okay, so we have completed the chapter, and now we will discuss the questions which are given in your textbook. Okay, so we will start with that only. So the first question is, it's a MCQ. A parliamentary executive means, what is the meaning of parliamentary executive? It means executive where there is a parliament, then executive elected by the parliament, then the C option is where the parliament function as the executive, and the option D is executive that is dependent on support of the majority in the parliament. So we can easily answer the question that parliamentary executive means the executive which is dependent on the support of the majority in the parliament, because parliament is not the executive organ. Parliament is the legislative organ, and our executive is also not elected by the parliament. है ना? There was a discussion in the Constituent Assembly. There were some members who wanted कि जो हमारा executive है उसको parliament की तरफ से elect होना चाहिए, जैसा कि स्विट्जरलैंड में है ना, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उसको नहीं अडॉप्ट किया. सो दिस इज द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है वो लेजिस्लेचर पे डिपेंडेंट होती है फॉर मेजॉरिटी. ओके, सो द फर्स्ट का जो सही ऑप्शन है वो डी है, ऑप्शन डी. ओके, एंड नाउ द सेकंड क्वेश्चन कम्स. द सेकंड क्वेश्चन इज it's a dialogue. Okay, and you have to say कि you agree with which of the dialogues and why. What is the reason for your agreement? Now Amit is saying, looking at the constitutional provisions, it seems that the president is only a rubber stamp. Rubber stamp means जो stamp लगता है ना, कोई भी जब किसी भी तरह का ऑफिशियल नोटिस या ऑफिशियल डिसीजन लिया जाता है तो उस पर सिग्नेचर के साथ एक स्टैम्प लगता है. एंड आई टोल्ड यू कि इट इज द डिसीजंस आर टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट दिस डिसीजन इज साइंड बाय द प्रेसिडेंट एंड अ स्टैम्प ऑफ द प्रेसिडेंट इज पुट ऑन द डिसीजन. तो अमित इज सेइंग कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंगली तो यही लगता है कि प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ एक रबर स्टैम्प है, उसको सिर्फ स्टैंपिंग करनी है. अदर देन दैट ही हैज नथिंग टू डू. एंड नाउ Sama is saying that the president appoints the prime minister, so he must have the power to remove the prime minister as well. It is the argument of Sama कि when the president is given the authorities, president is given the power to appoint the prime minister, so he must have the power to remove the prime minister. Okay, these are the arguments which are presented by different people. And now the third argument is from Rajesh. Rajesh is saying we don't need a president. हमें president की जरूरत ही नहीं है. After the election, the parliament can meet and elect a leader to be the prime minister. So what is the need of a president? जब भी इलेक्शन होगी उसके बाद जो पार्लियामेंट होगी वो अपनी मीटिंग करेगी और अपने लीडर को इलेक्ट कर लेगी. ओके, तो नाउ द क्वेश्चन इज कि यू अग्री विथ विच ऑफ द स्टेटमेंट, किसके स्टेटमेंट के साथ आप अग्री करते हैं, अमित, शमा या राजेश, और क्यों. सो वी सी कि वी कैन से कि यहाँ पर तीनों के ही जो आर्ग्यूमेंट है, वी डोंट अग्री विथ एनी ऑफ द argument. The first argument is given by Amit, which says कि the president is only a rubber stamp. No, the president is not a rubber stamp. Why? What can we present in order to support our view that the president is not a rubber stamp? There are situations
in which the president uses his discretionary power, and when he uses his discretionary power, in 3 situations are there in which he uses his discretionary power. So how can we say that he is a rubber stamp? There are situations in which he uses his reason. He is not functioning according to the aid and advice of the Council of Ministers, but he is functioning on his own discretion and on his own reason and wisdom. So you can't say that he is a rubber stamp. So the argument which we can provide here is regarding the discretionary power. And now comes the argument of Shama. Shama is saying that the Prime Minister is appointed by the President, so he must be removed also by the President. But we know the appointment by the President is not real. It's not that President can appoint anyone as a Prime Minister. President is bound to appoint only that person as a Prime Minister who has the support of the majority, who is claiming to have the support of the majority. If he is not having the clear majority, then he will be given some time to prove his majority, and if he is not able to prove his majority, then he will have to resign from the office. So we don't have a presidential system or a semi-presidential system that president should be given this much of power. President is only there to manage the things, like ऐसी situations हो जा रहे हैं when no political party is able to win the election. So in that situation, the president is there to decide to whom he should invite to form the government. तो इसमें अगर हम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कहेंगे कि उसको प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करने का भी पावर होना चाहिए, तो दैट विल बी नॉट a rational argument, because जब हमें अपॉइंटमेंट का ही पावर, रियल पावर नहीं है, हम लोगों के वी हैव अ डेमोक्रेसी, है ना, तो जो मैंडेट दिया है पीपल ने उसके अकॉर्डिंगली काम करना है ना. तो जब तक उसको पीपल का मैंडेट है, यानी कि जब तक द प्राइम मिनिस्टर इज हैविंग द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा, हाउ कैन अ प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम? No, this authority cannot be given to the president. So we do not agree with the argument of Sama also, because we have a parliamentary democracy. So the opinion of the people are most important. Other than that, nothing is important. Okay. And then the view of Rajesh is also not acceptable, because the same argument is there. Discretionary power. There are situations in which the president is very much important, especially the situation in which no party is able to win the support of the majority in the Lok Sabha. In that situation, there is need of a constitutional head of the country. एक कोई head होना चाहिए, because ऐसे situations हो जाते हैं जबकि हमारे कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाते हैं, तो वो जो सिचुएशन है उसको मैनेज करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि पार्लियामेंट मीट करेगी और अपने लीडर को चुन लेगी. इट इज नॉट दैट इजी. वी हैव डिस्कस्ड कि किस तरह से एक एमपी के लिए इतना सब कुछ होता है. आई टोल्ड यू कि किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग होती है पार्लियामेंट के अंदर, मेंबर्स की खरीद बिक्री होती है. अगर कुछ सीट से कोई एक पार्टी जो है वो मेजोरिटी से पीछे आ रहा है, तो ऐसे में हाउ कैन द पार्लियामेंट मैनेज ऑल दीज थिंग्स? इट विल नॉट बी पॉसिबल. तो एक अथॉरिटी होनी चाहिए, कंट्रोलिंग अथॉरिटी होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट ने किसको बुलाया. लाइक अब जो ट्रेंड डेवलप हो गया है वो यही है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक लिस्ट मांगते हैं, ड्यूली साइन की, सब जो भी आपके सपोर्टर्स हैं उनका साइन किया हुआ एक डॉक्यूमेंट दिया जाए, और तब प्रेसिडेंट विल डिसाइड कि हाँ किसके पास सही में वो है, मेजॉरिटी का सपोर्ट है. फिर उसको वो फॉर्म करने के लिए, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इनवाइट करते हैं, एंड देन द प्रेसिडेंट गिव हिम अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम टू प्रूव हिज मेजॉरिटी. तो ये सब कुछ, हाउ कैन इट, ऑल दीज थिंग्स विल बी मैनेज्ड इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट. सो वी नीड अ प्रेसिडेंट. इट्स नॉट कि वी डोंट नीड अ प्रेसिडेंट. इट हैज its utility. Okay, so this is our question number
2. And now we move to our question number 3. It's about matching. There are 2 columns and we have to match the items of column A with the items of column B. So we can see there are 2 columns. In the second column there is given different names of the services which we have discussed just now. जो हमारे ब्यूरोक्रेसी की जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनका नाम दिया गया है. लाइक सब फर्स्ट है इंडियन फॉरेन सर्विसेज, then in the second there is a state civil services or state services, both are same. These are civil services. In order to differentiate them with the military services, we call it civil services. And in the C, it's all India services. And D is central services. Okay. So here what we find कि जो हमारा फर्स्ट है ए में, फर्स्ट कॉलम में जो पॉइंट्स हैं वो क्या है? वर्क्स विद इन द पर्टिकुलर स्टेट इन विच रिक्रूटेड. जिस स्टेट में हमारा रिक्रूटमेंट हो रहा है हम उसी स्टेट में काम कर रहे हैं. तो ये जो हमारा 1 है दैट विल बी मैच्ड विद स्टेट सर्विसेज, है ना, कि एक ही स्टेट में वो काम करते हैं. जिस स्टेट में, जैसे अगर यूपी की जो प्रोविंशियल सर्विस कमीशन थी, अगर उसके थ्रू हमारा अपॉइंटमेंट हुआ है तो द पर्सन विल वर्क विद इन दिस टेरिटरी ऑफ यूपी ओनली. ओके, so the first is works within the particular state in which recruited is state's civil services. Now the second it's about the detail is works in any central government office located either at the national capital or elsewhere in the country. So this is about the all India services. क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिस है उसमें ये काम करते हैं. दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज व्हाई दे आर वर्किंग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज. एंड वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है वो कहीं भी लोकेट हो सकता है, या तो नेशनल कैपिटल में या किसी भी कंट्री के किसी भी पार्ट में. ओके, सो वी सी कि जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है उसका आंसर सी होगा. And then comes the third, works in a particular state to which allotted and can also be sent on deputation to the center. एक पर्टिकुलर स्टेट उनको अलॉट कर दिया जाता है एंड उसके बाद वो किसी भी समय उनको सेंटर में भेजा जा सकता है. ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है सेंट्रल सर्विसेज. एंड देन द लास्ट इज वर्क्स इन इंडियन मिशन अब्रॉड. जो अब्रॉड में हमारे मिशन होते हैं उन पर जो काम करने वाले होते हैं, दे आर द इंडियन फॉरेन सर्विसेज. सो दिस इज आवर मैचिंग. एंड नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग वी हैव टू सी द आइडेंटिफाई द मिनिस्ट्री विच मे हैव रिलीज्ड द फॉलोइंग न्यूज आइटम. एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसीजन लिया गया है जिसको कि बताया जा रहा है एंड आपको ये बताना है कि ये जो डिसीजन लिया गया है वो किसकी तरफ से लिया गया है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लिया है, सेंट्रल सर्विस ने, गवर्नमेंट ने लिया या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है, किसकी तरफ से ये डिसीजन है, कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व. एज वी आर स्टडिंग एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव इज रिगार्डिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें, तो किसका डिसीजन है ये. ठीक है, तो आवर फर्स्ट एक्शन इज दैट एन ऑफिशियल रिलीज सेड दैट इन 2004-05 द तमिलनाडु टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन वुड रिलीज न्यू वर्जन
फॉर स्टैंडर्ड 7, 10 एंड 11. तो दिस इज अबाउट द तमिलनाडु गवर्नमेंट. जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उसने ये डिसीजन लिया है. तो उस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट होगा, दैट विल टेक दिस डिसीजन की टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग उस स्टेट के पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं उसमें क्या होगा, कौन डिसीजन लेगा. द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD मिनिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, वो इस तरह के नोटिसेस रिलीज कर सकती है. ठीक है, क्योंकि जो एजुकेशन है वो एक पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है. एंड इसी तरह के कुछ और भी सिचुएशंस दिए गए हैं. वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास.